खानाया मोनजोब्बाय This species, it is also common in our area, na? So 하간 수산아 하간 돼 하간 네 라서이너 Hello everyone. Today जोंना second day जाबाय शिलंआव मैया सफैनानै ओमफ्राय दा जोङो बयबो जगनि थाखाय थांगासिनो बेनि उनाव जोङो दिनै चेरापुन्जियाव बेरायनो थांसै ओमफ्राय आंना मेगना एसे एलार्जि टाइप जादों ओंखायनो आङो सानग्लासेस गाननानैसो बेरायनो फैदों दा फुङाव ओमफ्राय बेनि उनाव देलायहैनानै थांसै बेरायनो Look at these cute dogs. ओमफ्राय जोंना मर्निं वाक खालामनायनि रियेल रिजनआ जाहैबाय जोङो केम्पासखौ नायलानो लुगैदोंमोन जों जेराव थादों जोङो नेहु इउनिभारसिटिनि सिङाव बेनि गेस्ट हाउसआव थादों नालाय जों बेखौ नायलानो लुगैदोंमोन 아야 다리 좀 가요 애들 잡고 애게 다 가요 애들 잡고 누나 후배나 모자신 खानाया 아야 안 봐. 그만 이제 내려오자 계속 안 해요 내로 또 시다 잠깐만 이거 사고 다음에 이러는 거 아니 팔핀이제 가봐 खानाया मोनजोब्बाय 포로 घे는 moment So this is the second stage for after the lichen stage, isn't it? So you can see the succession can occur in the rock, and that kind of succession, what do we call it? What do you call that? Ecological succession. No. It is called as lithospheric. That means the succession is starting from the rock surface. That is why we call it lithospheric, right? So you can see in the cavity there are some matters, soil deposits are there, organic matters. So there you can see some higher group of plants, higher than the lichens. You can see they are growing over here. But here in the surface, what do you see? There are some lichens only. So they are the pioneer organisms or the community you can call it. ना ठीक है? So इसको देख के भी आपको मालूम चलता है देखो ना जहाँ पे गड्ढा हुआ है लेकिन एज अ कॉमन मैन इसको देखने से कोई कुछ लगेगा नहीं कि क्या हो रहा है यहाँ पे है ना तो रॉक में ही है देखो सोइल फॉर्मेशन तो रॉक से ही होता है पहले जो वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था सोलिडिफिकेशन हो जाता है रॉक फॉर्मेशन होता है फिर इसके ऊपर में लाइकेंस आएगा लाइकेन इसको इरोड करेगा फिर है ना इसमें ऑर्गेनिक मैटर रिलीज करेगा फिर इसके जो केमिकल एक्सुडेट्स हैं वो छोड़ेगा फिर और कोरोशन ज़्यादा होगा धीरे धीरे स्मॉल लेयर ऑफ सॉइल विल बी फॉर्म ये आप ना ये 10 साल 20 साल के बाद देखना कि यहाँ पे फर्न्स आना शुरू हो जाएगा देखो इसमें एंडोस्पर्मिक प्लांट्स आ रहा है है ना लेकिन यहाँ तो नहीं है तो जहाँ पे ज़मीन थोड़ा थोड़ा बन चुका है जहाँ पे डिपॉजिट हो चुका है वहाँ से ये स्टार्ट होने वाला है ठीक है सो दिस इज़ अ बेस्ट एग्जाम्पल दैट यू कैन सी हाउ द सक्सेशन इज ऑकरिंग इन अ स्पेस वेयर इट इज द इनिशियल स्पेस इज योर द रॉक तो इसको हम लिथोस्फेरी बोलते हैं This species, it is also common in our area, na? So commonly it is known as tinku in our area, but you just see it is very completely different from each other, from tinku and that one. So what is the main difference? You just see. What is the number of petals here? Number of petals is 4.
and you just see it is free. Nah? So if free, then it falls under which group as per the Bantam and Hooker system of classification? If free, बेयाव बिसोरबो जोंनि बायदि स्टुडेन्ट्सफोर थांदोंमोन ओमफ्राय they were enjoying a lot dancing jumping and हम लोग तो केव के अंदर जा रहे थे लेकिन हमारा दिल वहीं पे अटका हुआ था आवगायदो दे मोजाङै हांफोरा मोजाङै ला बिजाङा औ हायो लासै जायो खर'आ नाय बिनि उनाव आरो फिसा फिसा गैलाना जायो दे यही मतलब एक्सपीरियंस ना तो ये केव में जा रहे थे बै हीरा बे मबाइल लाबो मोनसे लाबो दे आखाइ हमलाय दे थांगोन सासे थांगोन जिरायनानै थांसै खेब्बाय Sadly, आं बे जायगानि नामखौ सोंनो बावलायबाय but बे जायगा खाथियाव थानाय मानसिफ्रा जोंनो खोन्थादों कि बेयाव खालि लकेल्सफ्राल' फैयो